चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. दैट इज द ड्रीम ऑफ फैराडे, अंकल फैराडे, इज टू कन्वर्ट एंटायर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ये उसका ड्रीम सक्सीड हुआ या नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं. सो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है. तो टाइटल ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ. तो मोशनल ईएमएफ के टाइम पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है पर यूनिट टाइम, क्या वो कन्वर्ट होता है पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम के लिए, चेक कर लेते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल ईएमएफ इज गिवन एज E equals to BLV. We are not considering Lenz's law right now. Then electric current is given as I equals to E by R. So EMF is BLV by R. Electric power is given as power P E equals to I square R. So that is BLV by R the whole square into R. So the relation of electric power, that is electric energy per unit time, is given as B square L square V square अपॉन R स्क्वायर इंटू R. तो एक एक R कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनल पावर इक्वेशन इज B square L square V square by R. दिस इज इलेक्ट्रिक पावर. नाउ विल फोकस ऑन मैकेनिकल पावर. तो द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज ILB. I can be given as B into L into V by R into L. So this will be B square L square into V by R. But this is force. And in 11th standard we studied that mechanical power is given as P equals to F into V. The F is B square L square V by R into V. So finally it will be B square L square V square by R. So from these two equations we can say that mechanical power is same as electric power, or else mechanical energy per unit time is same as that of electric energy per unit time. So the dream was completed, successful, कि entire mechanical energy per unit time is converted into electric energy per unit time. ठीक है. नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस. पहले तो हम फिनोमिना समझ लेते हैं जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन इज नथिंग बट अ फिनोमिना व्हेन वी पास अ करंट थ्रू अ कॉइल in that same coil the flux is linked. That phenomena is known as self-induction, and the quantity is known as self-inductance, which is represented by symbol L. So it is defined as the total magnetic flux linked with the coil per unit electric current passing through the coil is called self-inductance. It is represented by symbol capital L. The capital L is a ratio of total number of flux linked with the coil upon the current passing through that same coil. So unit wise अगर आप चेक करो तो फ्लक्स इज गिवन बाय यूनिट वेबर, करंट इज गिवन बाय यूनिट एरिया. तो वेबर पर एरिया, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ हेनरी, सिम्बलाइज बाय कैपिटल H. डायमेंशन वाइज द वेबर इज हैविंग अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m1 L2 T minus 2 A minus 1 upon A1. So final dimension formula of self inductance is given as m1 L2 T minus 2 A minus 2. Now this was the first approach, first definition of a self-inductance based on flux, magnetic flux. Now suppose if I multiply I with the self-inductance, the new formula will be n phi equals to Li. Now if I derivate both these sides with respect to time, the derivative of n phi with respect to dt equals to derivative of Li with respect to dt. But we know that LHS term is nothing but time rate of change of magnetic, total magnetic flux is nothing but EMF induced as per Faraday law. And negative sign indicates presence of Lenz's law. So you substitute this LHS term equals to minus E, and from RHS taking out L constant, so that will be di by dt. So L into di by dt. So make the equation of L. So L is given as minus E upon di by dt. So this will be second definition of self-inductance, which is defined as the EMF induced in the coil per unit rate of change of current in the coil. उसका सेकेंड डेफिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट आप चेक करो. सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. ना अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो करंट था, तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस करंट पर क्यों नहीं डिपेंड करता. तो लॉजिकली सोचो, ऐसे हमने दो रिलेशंस आगे पहले कवर कर दिए थे सेकेंड चैप्टर में. C इज इक्वल्स टू Q बाई V, बराबर. एज potential difference, as charge increases potential difference also increases, so capacitance ratio remains constant. Another same approach we have studied in third chapter by Ohms law.
R equals to V by I. As current increases, potential difference increases. So the ratio of current that the ratio resistance always remains constant. Same over here. When we increases the current, number of flux, total flux linked with the coil also increases. So these two are directly proportional. So as current decreases, flux increases, so the ratio remains constant. The self inductance does not depend on current. तो किस पर डिपेंड करेगा? So it depends on three factors. First, size and shape of the coil के टर्न्स. Second, number of turns, कितने टर्न्स. एंड थर्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑन विच द कॉइल इज बाउंड. यानी अगर हम कॉइल को कोई मटेरियल के ऊपर फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर वर्क करते हो तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा. सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल. ठीक है. Then the last pointer says that self-inductance, that is EMF, always opposes the change in the current in the coil. That is, it opposes increase or decrease in the current in the coil. यानी इंडक्टेंस प्रॉपर्टी एक्ट एज अ इनर्शिया. मतलब सेल्फ इंड्यूस EMF क्या करेगा? वो ऑलवेज अपोज करेगा किसको? करंट को. मतलब कि वो बिहेव करेगा एज अ इनर्शिया. इनर्शिया में 11th स्टैंडर्ड में सीखा था कि वो मोशन को अपोज करता है. जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया. वैसे ही सेम अप्रोच यहाँ पर कौन आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मास की जगह पे वो रोल यहाँ पर कौन प्ले करेगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. ये पूरा कंसेप्ट हो गया सेल्फ इंडक्टेंस. चलो, तो सेल्फ इंडक्टेंस के बाद अब आ जाएगा नेक्स्ट कंसेप्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस. Now before we start with mutual inductance, let us understand mutual induction. What is mutual induction? कि करंट में पास करूँगा कॉइल 1 में, करंट में पास करूँगा कॉइल 1 में, लेकिन फ्लक्स लिंक होगा कॉइल 2 में. बराबर. इसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन. अब क्वांटिटी देख लेते हैं. क्वांटिटी को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस. So the total magnetic flux linked with the coil per unit electric current passing through other coil is called mutual inductance. So अगर मैं लिखता हूँ M12, where M is the symbol for mutual inductance, तो M12 यानी क्या होगा? तो दैट इज d∅1 टोटल अपॉन I2. यानी फ्लक्स लिंक होगा कॉइल 1 में, लेकिन करंट पास करेंगे हम कॉइल 2 में. सो 1 आएगा तो न्यूमरेटर में 1 चलेगा, 2 होगा वो डिनोमिनेटर में चलेगा. तो सिमिलरली M21 इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल फ्लक्स लिंक विद कॉइल 2 अपॉन टोटल करंट पासिंग थ्रू कॉइल 1. ऐसा यूनिट वाइज सेम इट विल बी वेबर पर एम्पियर और हेनरी डायमेंशन फार्मूला विल बी ऑल्सो सेम M1 L2 T minus 2 M minus 2. Now again, if you want to understand that second relation, we'll multiply I2 with M21 or I2 with M12. ठीक है. So phi2 total is M21 into I1. Derivate both the side with respect to time. So we know that LHS term is nothing but EMF as per Faraday's law, and negative sign indicates presence of Lenz's law. So minus E2 equals to M21 dI1 upon dt. So make the equation of M21, that will be minus E2 upon dI1 by dt. So इसके ऊपर से सेकेंड डेफिनेशन मिल जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द EMF इंड्यूस इन वन कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द अदर कॉइल. ठीक है. आगे देख लेते हैं. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन, पहले 3 पॉइंट तो सेम ही है जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में देखा. First is size and shape of turns, second is number of turns, third is magnetic property of the material on which the coil is wound. फोर्थ पॉइंट आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स. दोनों कॉइल्स के बीच में मैंने गैपिंग कितना रखा उस पर भी डिपेंड करेगा. और म्यूचुअल इंक्लिनेशन और रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, यानी दो कॉइल्स पैरेलल में है, परपेंडिकुलर इंक्लाइन रखा है, कैसा रखा है दोनों कॉइल्स को, इस पर भी डिपेंड करेगा. The last point, the mutual inductance of system of two coils does not depend on the electric current passing through the coil. ये सेम पॉइंट है जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में भी देख लिया था. बराबर. क्लियर सबको?